What is the and how the name this nucleic acid comes? न्यूक्लिक एसिड का नाम कहां से आया? How? Anybody? कौन बताएगा न्यूक्लिक एसिड का नाम कहां से आया? Actually, nucleic acid name as it is first discovered from nucleus of WBC. WBC के न्यूक्लियस से फर्स्ट डिस्कवर हुआ था and are acidic in nature. That is why it is named as what? Nucleic acid. And this is actually happened in 1869. Now there are, as told already, there are different type of DNA are there. zDNA, aDNA, pDNA, cDNA, and ddNA. zDNA is actually 12 base pair per turn. This is 11 base pair per turn. This is 10 base pair per turn. This is 9 and this is 8. याद रखना बहुत easy है. And the zDNA is only the left-handed. ये left-handed DNA. बाकी जितना है वो सब क्या है? Right-handed. इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में रहता है, and that is what Chargaff's rule. Chargaff's rule. And it is actually discovered by, or it is actually proposed by what? Erwin Chargaff. कब हुआ था? 1950 में. And बहुत ही क्लियर कट इसका पॉइंट्स है. Number 1, the number of purine is equal to the number of pyrimidine. मतलब A plus G is equal to what? Cytosine plus thymine. So A plus G is equal to C plus T. ये हो गया number 1. Number 2, number of adenine is equal to number of what? क्या होगा? Adenine किसके साथ bind करता है? Thymine के साथ. So number of adenine is equal to number of thymine. Likewise, number of cytosine is equal to number of 1. GC लिखे better होगा. Third point. A plus T by G plus C. इसका रेशियो क्या होगा?
So ratio of A plus T by G plus C is constant for a particular basis. That is actually constant for a particular species and vary from species to species. अब देखिए नंबर 4 में आते डायग्राम हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब उस डायग्राम को देख के बोलिए कि नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फेट, इट इज ट्रू और फॉल्स? नंबर ऑफ पेंटोज शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फेट। देखिए तो करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो डायग्राम में मैंने कितना शुगर टोटल किया था? 8, मतलब 4 बेस पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर शुगर एंड 4 पेयर फॉस्फेट है। समझे कि नहीं? क्योंकि एक एंड हमेशा OH एंड रहेगा, दूसरा एंड क्या रहेगा ना, फॉस्फेट एंड। दैट इज व्हाई द फोर्थ स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फॉस्फेट। नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फेट। नाउ इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, इज इट फॉलो बाय डीएनए और आरएनए और बोथ? चार्जर्स रूल फॉलोड बाय डीएनए, आरएनए। ऑप्शन 3 में दिया है बोथ। Why it is always applicable to the DNA only, why not RNA? फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, ये जो कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड। एंड डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है कि आरएनए? इन जनरली डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इन जनरली क्या होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, बट डबल स्टैंडर्ड आरएनए आर आल्सो देयर, लेकिन वो बहुत रेयर है। एंड दैट इज व्हाई हम इसीलिए बोलते हैं कि चार्ल्स रूल नॉट फॉलोड बाय आरएनए। जो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने लिखा, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने लिखा है, ये एक्चुअली बहुत ही रेयर होता है। जैसे कि रियो वायरस हो गया, राइस डॉर्फ वायरस हो गया, उनके केसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो कि बहुत रेयर है। एंड दैट इज व्हाई सो आरएनए डू नॉट फॉलो चार्ल्स। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे रहेगा? सपोज टू बी a particular animal has actually the percentage of the cytosine is supposed to be, मान लेते हैं 23%। ठीक है, what is exactly the percentage of purine and pyrimidine? प्यूरिन का परसेंटेज कितना है, पायरिमिडीन का परसेंटेज कितना है? सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस का परसेंटेज दे रखा है, बहुत इजी है। अगर साइटोसिन 23% है तो फिर गुआनिन कितना होगा? 23%।
तो फिर एडेनिन कितना हो गया 23 प्लस 23 कितना हो गया 46 माइनस फ्रॉम 100 कितना हो गया 44 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा तो एडेनिन हो गया 22 एंड थायमिन आल्सो 22 समझ में आया कि नहीं तो आपको पूछा है प्यूरिन तो प्यूरिन का परसेंटेज कितना होगा प्यूरिन का परसेंटेज कितना होगा A and G is equal to purine तो कितना हो गया 45 एंड पाइरीमाइडिन क्या है C प्लस T कितना हो जाएगा वही बेटा हो गया सर 100 minus 46 54 को डिवाइड करिए आप लोग क्या उल्टा सीधा कर ऐसे करते हैं क्वेश्चन हाँ फिर आंसर क्या होगा 23 27 and this is also questions बहुत ही frequently आता है so next we are coming to RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग डायरेक्टली आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए में जैसे कि फर्स्ट इज एमआरएनए मैसेंजरल आरएनए परसेंटेज क्या है एमआरएनए का 5 to 10% of the RNA which is present in the cell is mRNA and what is the function of mRNA कहाँ पे फॉर्म होता है mRNA synthesized from DNA DNA से synthesis होता है कि नहीं by means of the process called as transcription तो ये फिर कहाँ पे होगा synthesized in nucleus or inside the cytoplasm and that carry message or information for that is protein synthesis. It carry the message for the protein synthesis. Number 2. Next आते हैं हम लोग सबसे ज्यादा अबाउंडेंट कौन है RNA. परसेंटेज अगर हम लोग देखें कितना परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल RNA is rRNA. And function क्या होगा the site of what protein synthesis. This is the site of the protein synthesis and largest RNA भी होगा abundant RNA भी होगा largest and abundant. Number 3 tRNA. tRNA का परसेंटेज कितना हो गया ना 10 to 15%. ये स्मॉलेस्ट RNA. फंक्शन क्या है अच्छा tRNA कितने टाइप का हो सकता है बोलिए तो tRNA का अदर नेम क्या है अडैप्टिव RNA सेल्युलर RNA तो फंक्शन क्या है tRNA अमीनो एसिड कैरी करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड मैंने आपको बताया था कि टोटल अमीनो एसिड नंबर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज 20 याद आया तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ tRNA शुड बी देयर 20 टोटल की बात हम कर रहे हैं क्या वही तो मैं बोल रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं tRNA ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अमीनो एसिड या कोडन 20 amino acid is present for the formation of what na protein
तो इसलिए 20 tRNA भी होगा। मैं खाली इतना लिख देता हूं कि डिफरेंट टाइप्स of the tRNA are there which actually carry or transport amino acid for protein synthesis. इसका अदर ने मैंने आपको क्या बोला, soluble RNA और adaptive RNA। So this is all about the different type of RNA. So we have finished the nucleic acid. Now we are coming to the concept of metabolism. Coming to the next concept of metabolism. What is metabolism? Sum total of all biochemical process is called metabolism. And biochemical process लिखा मतलब inside the cell. So sum total of all the biochemical process which is occurs inside the cell is called as metabolism. Two type है, एक है constructive, that is called as what? Anabolism, and destructive called as catabolism. देखिए जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी के अंदर, एक पर्टिकुलर सिंगल रिएक्शन होता है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन? बहुत ही रेयर होते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में अटक जाता है। इसका कारण कौन कौन बताएगा? Why the chemical reaction or the metabolism takes place in the series of reaction, series of linked reaction. So as to reduce the loss of energy in the form of heat. No. No. बताइए, बहुत इजी कंसेप्ट है। If the A will be changed into B frequently, the concentration of B will increase, and that B increased, and ultimately that will reach what na? Equilibrium. बढ़ते 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 equilibrium reach कर जाएगा, and once the equilibrium will reach, the chemical reaction will stop, metabolism will stop, the organism will die, and that is why हम लोग पढ़े हैं कि living beings are non-equilibrium or equilibrium. Living beings are non-equilibrium steady state. Steady मतलब constancy, continuous process को हम लोग steady बोलते हैं, and it is non-equilibrium. अगर आपको non-equilibrium करना है, means this particular B जो chemical है B, that should not reach what? Equilibrium. तो रीच करने से पहले वो B चेंज होगी, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा into C supposed to be, है कि नहीं? तो A हो के B हुआ, B हो के C हुआ, C हो के D चलेगा। ऐसे ये सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन हुआ कि नहीं? एंड ये जो सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन है, that may be cyclic, that may be linear, that may be crisscross, just like a traffic junction in a metro city. मेट्रो सिटी आप लोग गए हैं कभी? कोलकाता तो पक्का गए हैं। वहां पे ऐसे बहुत सारा स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारा कनेक्टिंग होता है, कहीं पे ऐसे क्रिस क्रॉस है, कहीं पे सर्किल टाइप का है, कहीं पे स्ट्रेट भी है, जस्ट लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच इज ऑकर्स इन योर बॉडी लाइक दिस। एंड अगर ट्रैफिक जंक्शन में अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं रहेगा, ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, तो क्या होगा? हो गया एक्सीडेंट। तो आपके बॉडी में अगर एक केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन के साथ अगर कोलाइड करता है, तो मेटाबॉलिज्म विल बी नॉर्मल और मेटाबॉलिज्म विल बी एरर।
उसको बोलते हैं एरर मेटाबॉलिज्म। एरर मेटाबॉलिज्म दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एरर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। जो आपके बॉडी में होना नहीं चाहिए वो होगा, जो केमिकल आपके बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए वो होगा, हार्मफुल केमिकल फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द मेटाबॉलिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको? मेटाबॉलिक फ्लक्स। केमिकल रिएक्शन takes place in a series of linked reaction called turnover of molecule, और metabolic flux और metabolic flow। सब एक ही टाइप के, सब अलग अलग मीनिंग तो है बट ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड इट इज जस्ट लाइक ए मे बी लीनियर, मे बी सर्कुलर, मे बी क्रिस क्रॉस। जैसा आप लोग पढ़े हैं क्रेब साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, कोरी साइकिल पढ़े हो कि नहीं? तो वहां पे सब केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है? साइक्लिक। क्लियर है? मैं आपको बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से क्रिस क्रॉस वाला, सर्कुलर वाला, लिनियर वाला, मल्टी स्टेप रिएक्शन हर चीज में दिखाऊंगा। जस्ट वेट। और नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन एक आता है कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी? Which organ is involved in the synthesis of the cholesterol in your body? Liver। पढ़े थे हम लोग। तो लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, which is the primary substrate or primary precursor for the formation of this cholesterol। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक सिंगल स्टेप में फॉर्म नहीं होता है, बहुत सारा मल्टीपल स्टेप्स में फॉर्मेशन होता है। विच इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट और द फर्स्ट प्राइमरी प्रीकर्सर, उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रीकर्सर, मतलब फर्स्ट सबस्ट्रेट। एंड ये क्वेश्चंस में आता है डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन। नहीं पढ़े हैं ये आप लोग इग्नोर करते हैं। यस, एसिटिक एसिड, इसके लिए पढ़िए हर चीज को बारीकी से देखिए। और एनसीईआरटी को छोड़ के आप लोग को बाहर जाना ही नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बाहर का कोई बुक्स करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये 10 साल पहले का ट्रेंड था। देखो हम जीआरबी कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं, देखो हम वो कर रहे हैं, दिखाने के लिए शोबाजी। आपको करना है तो करिए। ये मेरे पास देखिए सर 15 साल पुराना बुक है, मैं क्या करूँ? खोली करके उसको बेचो, भजिया बेचो उसको, मैं क्या करूँ उसका? इलेक्ट्रॉनिक सामान जब आप खरीदते हैं मोबाइल, तो आप 15 साल पहले वाला मोबाइल खरीदते हैं क्या? 5 साल पहले मतलब नहीं, 10 साल पहले का पुराना चीज है ले लो, बहुत अच्छा चीज है, ले लो ना। नहीं, पूरा अपडेटेड चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन बुक्स के मामले में सर ये मेरे बड़े भैया का है, हम सर मैनेज कर लेते हैं। अरे नया एनसीईआरटी खरीद लो सर, मेरे पास है सर 5 साल पुराना है, लेकिन मैनेज करो मैनेज। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे कि आप लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो स्टडी मेट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो असाइनमेंट्स, मोर देन सफिशिएंट है। Still, if you need want, then you go for any kind of objective book only, which is based on NCERT, that to be latest. ठीक है? Acetic acid is the primary precursor of cholesterol
Acetic acid is the primary precursor of cholesterol synthesis in liver by multiple steps. तो लिविंग स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, राइट? फिर नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे? बोलिए। Living beings are non-equilibrium steady state so as to able to work. तो फिर नॉन लिविंग क्या हो जाएगा? उल्टा पूरा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक स्टेट. नॉन इक्विलिब्रियम इज that is non living is equilibrium and static state. Living are non equilibrium and steady state. कंप्लीट है ये पेज. नेक्स्ट पेज में मूव करें. Which is the energy currency of your cell? किसको बोलते हैं? Heat. Adenosine triphosphate, ATP. First question is ATP क्या है? Is a nucleic acid, is a nucleotide, is a nucleoside. क्या है ये? एडेनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है. न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? That is why ATP is a nucleotide which is made up of adenosine, that is nucleoside, plus phosphate. How many phosphate? 3 phosphate. एंड दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ATP is a nucleotide of RNA or nucleotide of DNA? क्या है? सही में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए? छोटा छोटा बारीकी चीज को भी आप लोग इग्नोर कर जाते हैं. आप एटीपी का डायग्राम आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं? क्या देखे? पोजीशन दिखाते हैं. दिस इज 1, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन में ही बाइंड करता है, याद है? बहुत बढ़िया. This is first position, this is second position, this is third, this is fourth, and this is supposed to be 5 हो गया. मैंने शुगर को मूव कर दिया, ठीक है, 180 डिग्री. तो सेकंड पोजीशन में OH है कि H है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA और RNA. आप तो बोल रहे थे बहुत है.
देखिए आप लोग कहाँ पे फंसते हैं, क्यों गलत करते हैं, सोचिए। हम क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा चीज पे हम लोग का अभी ऑब्वियसली भाई बड़े चीज पे नजर तो पहले ही जाएगा, लेकिन नीट वालों का नजर पहले कहाँ जाता है, छोटा छोटा चीज। हम लोग तो बड़ा चीज देखेंगे। Now, this is actually the structure of adenosine triphosphate. As you can see here, यहाँ पे कितना हाई एनर्जी बॉन्ड है, number of the high energy bond is 2. This is why ATP can be break down into ADP plus inorganic phosphate with the release of energy. And the second is ADP, adenosine diphosphate, with the release of adenosine monophosphate plus PI plus energy. क्योंकि ATP के पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो दो बार हम उसको ब्रेक कर सकते, मींस दो बार एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जब AMP आपके पास है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट के पास कोई हाई एनर्जी बॉन्ड है क्या? तो AMP फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ठीक, तो ATP is the energy currency of cell, एंड ATP को और क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर and the energy currency of this cell. किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का, आप लोग गौर से जाके जिस दिन जो पढ़ाई होता है, मैं स्टार्टिंग में से ही बोला था, स्टार्टिंग में सब कुछ सुनाई देता है, समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको भूल जाते हैं, उसके वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड जैसे टाइम आपका निकलता जाता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। मैंने आपको बोला था कि एवरी डे हम लोग का जो क्लास हो रहा है 1.5 घंटे का, बायो के मामले में आप लोग डेली जाके एनसीईआरटी एक बार क्रॉस चेक करिए, उसको रीडिंग करिए। मैं 1.5 घंटे में जितना पढ़ा रहा हूँ, आपको घर जाके एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली हाफ एन आवर। तो क्या हाफ एन आवर हार्डली आप दे नहीं सकते एवरी डे? उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि सर ने क्या क्या बताया था क्लास में, कि एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है, उससे आपको ही फायदा होगा। एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है कि ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज गैस। देखे कहीं पे? नहीं देखे। हाँ, 4.6 देखे, वो क्वेश्चन आता है सीधा, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 2 3 4, राइट दैट पॉइंट। The blood concentration of glucose in a normal healthy individual is, the blood concentration of glucose in a normal healthy human being is 4.2. The blood concentration of glucose in a normal healthy human being is 4.2 to 6.1 millimolar.
4.2 to 6.1 मिलीमोलर। यहां से क्वेश्चन रहता है। So let's start the next topic, enzymes. All enzymes are formed of protein except ribozyme and ribonuclease P, ये दोनों क्या है? And this is actually nucleic acid. These are the two different type of enzyme which is not made up of protein but made up of nucleic acid. इसके बारे में थोड़ा सा इवोल्यूशन में मैं बताऊंगा आरएनए वर्ल्ड। वहां पे एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है कि probably the first macromolecule is not the coacervator microsphere but it is also what ना RNA। एनसीईआरटी का एक लाइन है, उस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। तो इवोल्यूशन टॉपिक जब स्टार्ट होगा मैं इसको फिर से पूछूंगा आपको, तो याद रहना चाहिए। So enzymes are formed of secondary protein, tertiary protein, both protein or none of this। इसीलिए एनसीईआरटी को ना गौर से पढ़िए। आप अपना फॉल्ट को ढूंढ नहीं पा रहे था कि मेरा इतना खराब मार्क क्यों आया, कम मार्क क्यों आ रहा है, मेरा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। मैं हर क्लास में ये इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ और समझदारों को इंडिकेशन काफी होता है। एनसीईआरटी में एक थर्ड लाइन लिखा है, बोल दूंगा कि स्पेस में लिखा हुआ कि एंजाइम्स आर formed of, that is enzymes are chemically formed of secondary and tertiary protein। क्वेश्चन तो आंसर तो बोथ होगा। आप लोग निकले एनटीए को चैलेंज करने के लिए, करिए चैलेंज। मोस्ट प्रोबेबल क्या है? टर्शियरी। इसीलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। पिछले साल जो गलती की है फिर से वो गलती मत करिए। अगर सेम टाइप का पढ़ाई, सेम टाइप का रूटीन, सेम टाइप का फ्रेंड, सेम टाइप का सोशल मीडिया, सेम टाइप का मोबाइल फोन, सब कुछ अभी सेम चल रहा है जो चल रहा था पिछले साल, मतलब अभी भी आप प्रीवियस ईयर का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल का नहीं कर रहे। It is formed of structurally secondary and tertiary protein. Most maximum enzymes are made up of tertiary, but they also have secondary. जैसे मैंने आपको दिखाया था वहां पे, आपको याद होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टर्शियरी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। And you know this is supposed to be the primary structure of protein, and that will be converted into what? Now tertiary form of protein N and C। क्या मैंने समझाया था कि every amino acid which is present in the primary structure protein have the different R group, right? And ये distantly located जो R group है that actually comes close and they will form the several services or pockets, and one of the services or pocket where the cofactor will be bind, now called as what? Catalytic cycle।
catalytic site or active site with what? The cofactor. And इसी cofactor की वजह से tertiary structural protein becomes active to do the chemical reaction. That is why the enzymes are called as what? A biocatalyst. Why called as biocatalyst? Because it is a catalyst. Those chemical which will catalyze the chemical reactions are called as what? A catalyst. And ये किसके अंदर present है? Living cell के अंदर present है. That is why it is called as what? Biocatalyst, where the substrate will be converted into what? Na product. अभी हम लोग सीधा आते हैं difference between the inorganic catalyst and biocatalyst. Enzymes or biocatalyst with respect to the difference of inorganic or chemical catalyst. Number one. Character number one. Enzymes are formed of what? Protein. Inorganic catalyst is formed of small molecule like nickel and platinum. Number two, present in the cell. It is not in the cell. Enzymes क्या होते हैं? Specific होते हैं कि non-specific होते हैं? So they are specific. Specific means they catalyze a specific or particular chemical reaction. वही particular है. लेकिन जो inorganic catalyst होते हैं, these are actually non-specific. Non-specific का मतलब क्या हो गया? Now this particular catalyst will catalyze the several different type of chemical reaction. That is why it is not specific or non-specific. Point number 4 complete हो गया. Point number 3. Point number 4. हाईली स्पेसिफिक है कि लो स्पेसिफिक है? सॉरी, हाईली कैटलाइज्ड की नो, दैट इज लेस कैटलाइज्ड. बायोकैटलिस्ट क्या बोलेंगे? बायोकैटलिस्ट अगर सपोज टू बी मान लेते हैं हाई टेम्परेचर में ये हाई एफिशिएंट होगा कि लो एफिशिएंट होगा बायोकैटलिस्ट? ये नॉर्मल टेम्परेचर में अगर दोनों को कंपेयर करें तो विच इज मोर एफिशिएंट? बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट. This is less efficient. Number 5, get denatured at high temperature. And this is efficiently work at high temperature. ठीक है? अगर टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो एंजाइम जो है वो डिनेचर्ड हो जाएगा. लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर में क्या होता है ना, बहुत ही हाईली एफिशिएंटली वर्क करता है. छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं. You know the most
active enzyme, the most efficient enzyme of your body, carbonic anhydrase. Carbon dioxide, water. In absence of the carbonic anhydrase, absence भी हो सकता है, presence भी हो सकता है. Absence of the carbonic anhydrase that actually produces carbonic acid only 200 molecules per hour. ये है टर्नओवर रेट. टर्नओवर का मतलब क्या है ना, रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, टर्नओवर. बट सेम रिएक्शन when it is catalyzed by carbonic anhydrase, that produces approximately 6 lakh molecule per second. Just imagine करिए. So हम अगर कंपेयर करें तो विथ एंजाइम इसका टर्नओवर रेट कितना हो गया, 6 lakhs per second. कंपेयर अगर किया जाए तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन टाइम्स फास्ट in presence of enzyme. So 10 million times faster in presence of the enzyme. इसीलिए एंजाइम बहुत ही हाईली एफिशिएंट होते हैं. अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि एवरी 10 डिग्री केमिकल 10 डिग्री अगर इंक्रीज करेगा तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा. Rate of the reaction get double, and if the temperature will get half, the temperature will get 10 degree minus, the reaction rate will be half. But it should be within what ना optimum. Suppose में एक रेंज दिया है, मान लेते हैं रेंज दिया जैसे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 0 to 40 डिग्री का एक रेंज दिया है. तो 0 to 40 डिग्री का जो टेम्परेचर का रेंज है, with every increase in the temperature of 10 degree, the reaction turnover rate get double, and every 10 degree decrease, the rate of reaction get half. बस इतना ही याद रखना है, ठीक है. Next we are coming to That's a 4.2 less efficient compared to enzyme or biomolecules. So sir, वहाँ पे efficiency increase करता है with the increasing in the temperature in case of inorganic catalyst. लेकिन हाई टेम्परेचर होगा तो डिनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम, इसीलिए डिनेचर्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर में. सो इट इज लेस एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर. बट अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में दोनों को कंपेयर करें तो biocatalyst, you can see the example how many times in absence of the enzyme and in presence of the enzyme. इसीलिए हाई एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट ये कॉमन कैरेक्टर है. लेकिन अगर टेम्परेचर का बात हम लोग करें, हाई टेम्परेचर, देन इट बिकम्स डिनेचर. ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया. सपोज में भी this is substrate, it is bind with the enzyme to form enzyme substrate complex. क्या ये सबस्ट्रेट वन स्टेप में ही पूरे डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा. सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स will convert
the substrate into multiple steps. जैसे कि सपोज टू मान लेते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत सारा आता है x1 then x2 then x3 ऐसे करके बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेज आएगा and that finally get enzyme product complex and the enzyme will be separate and the product gets separate. So what is the mechanism behind the conversion of substrate into product by the enzyme? क्या होगा? What is the mechanism through which the enzyme is converting the substrate into product? बताइए ना. आप अगर हर चीज को साइंटिफिकली सोचेंगे तो आप बहुत जगह पे क्या होगा ना प्रॉब्लम होगा. आप हर चीज को थोड़ा सा कॉमन सेंस में सोचिए. मेरे पास एक सपोज टू बी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लेते हैं एक बड़ी बिल्डिंग है. मुझे उस बिल्डिंग को हटा के नया बिल्डिंग बनाना है. क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पुराने को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना, फिर नया ईटा वगैरह वगैरह सब भी जोड़ के फिर से नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, है कि नहीं? एक्चुअली सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट एक टाइप का केमिकल है that is will bind with the enzyme to form the enzyme substrate complex. So enzyme, how do they convert the substrate into product? Now by means of breakdown of old bond and formation of new bond. देखो कितना इजी है. स्ट्रक्चर जो है किसी केमिकल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को चेंज करना है so that the substrate will be changed into product. How? बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसका जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि नहीं, शेप उसका चेंज होगा कि नहीं, by means of the breakdown of the old bond and formation of the new bond. Now the chemical which is formed, which we called as a product. तो क्या एंजाइम के साथ ये जो सबस्ट्रेट बहुत ही टाइटली फिट हुआ था, अभी प्रोडक्ट बनने के बाद ये के टाइट फिट कंटिन्यू करेगा या ये लेस फिट होगा? लेस फिट होने की वजह से ये एंजाइम से सेपरेट हो जाता है. Now it is called as what? Product and enzyme. At the end of the reaction, एंजाइम यूज्ड अप हुआ कि एंजाइम जैसे था पहले वैसे ही है, मतलब अनयूज्ड. सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम अनयूज्ड. अगर क्वेश्चन पूछूं आपको कि स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज ए ह्यूज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट. फॉल्स और ट्रू? देखिए आप लोग ना बिल्कुल गधे के गधे रहो. मैंने क्या बोला? एट द एंड ऑफ द सबस्ट्रेट, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम यूज्ड अप कि अनयूज्ड? अगर ये अनयूज्ड है तो ये फ्री हो गया. अब ये फिर दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा कि नहीं? तो क्या होगा आंसर? कौन बोल रहा था भाई फॉल्स? एंजाइम तो यूज नहीं हो रहा है ना, सबस्ट्रेट चेंज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो सेम एंजाइम फिर से सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. The small quantity or small concentration of enzyme can catalyze a large number of substrate. So please write few point. ये बात देखिए, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? अनस्टेबल है कि स्टेबल है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है कि स्टेबल है? अगर अनस्टेबल है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट बोलेंगे कि नहीं? And during the conversion of the substrate into product, there are so many intermediate forms are there. This is called as transition state structure. Or altered structural state. Don't be confused with the transient or transition. दोनों में difference. Transient मतलब क्या है? Transient मतलब क्या है?
will be present for the long time period की short time period? क्यों ये short time period के लिए present है? Because it is unstable. इसीलिए enzyme substrate complex can be transient and unstable. But when they converted into the product, there are so many intermediate form is there. That is why it is called as transition. का मतलब होता है intermediate or in between. That is why it is transition state and transition state में जो बहुत सारा state आ सकता है या only one transition state आ सकता है. Many transition state आ सकता है and that is why it is called as many altered structural state. Clear है? So please. We go for the ये complete हो गया सबका. Next में हम लोग आते हैं. Any reaction to start the chemical reaction. Any reaction to be start. What we need actually. आप लोग पढ़े हो ना? Free energy we need for the initiation of any chemical reaction is called as what? Activation. The energy which need to initiate a chemical reaction is called activation energy. एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? How do the enzyme is actually decreasing the activation energy? पाथ चेंज कर देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा. अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा तो मींस एनर्जी इज टू बी कंजर्व्ड बाय द एंजाइम. अगर एनर्जी कंजर्व हुआ तो रिएक्शन फास्टर होगा कि स्लो होगा? फास्टर होगा क्योंकि एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं. रास्ता जो है, जो रूट है, जो पाथ है वो शॉर्ट हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. So let's see. This is a transition state. This is actually the potential energy. This is substrate, this is product, and this is progression of reaction. As you can see, this is actually in activation energy in absence of enzyme, and this is the activation energy in presence of enzyme. Substrate is present in the high energy level, key product is present in the high energy level. The substrate is changing into the product. High energy level change into low energy level means energy is releasing during the chemical reaction. So this is exothermic and endothermic.
So this is the exothermic chemical reaction represented graphically in absence of enzyme and in presence of enzyme. तो आप देख सकते हैं in absence of the enzyme इसका जो path है वो अलग है. In presence of the enzyme उसका देखिए path अलग है. And दोनों path को अगर compare करें तो activation energy यहाँ पे reduced in presence of the enzyme. That is why the route or the path being changed. But ultimately और finally product तो same formation हो रहा है ना. Clear है? And why it is written being here it is transition state. Transition state क्यों लिखा है वहां? अभी मैंने आपको समझाया कि during the chemical reaction the old bond break, new bond form. Old bond break हुआ and new bond form होगा. दोनों के बीच का जो mid point है उसको क्या बोलेंगे? Transition. तो मतलब यहां से धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ. ब्रेकडाउन होते होते पूरा मिड में पहुंचा जहां पे ना सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है ना प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर. इसीलिए ट्रांजिशन बोलते हैं उसको. ट्रांजिशन के बाद क्या होगा? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट. क्लियर है? Enzyme lowers the activation energy by changing the path of chemical reaction. Completed. Now, जैसे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही पॉइंट फटाफट लिख लीजिए. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. अभी मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट्स बोला कि एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ टू फिट more tightly, then will break the old bond, will form the new bond, and the enzyme will be unused at the end of the reaction to continue the reaction again, right? First point. Substrate binds to active site of enzyme to form ES complex. Substrate binds to enzyme at active site. Substrate binds to enzyme at active site to form ES complex. That is enzyme substrate complex. Number 2, the binding of substrate induce. The binding of substrate induce the enzyme to alter its shape, and fits more tightly around the substrate. Point number 3, active site of enzyme breaks the chemical bond of the substrate
breaks the chemical bond of the substrate and forms new chemical bonds. Forming enzyme product complex. Form enzyme product complex. Next point. The enzyme release the product of the reaction. The enzyme release the product of reaction. And the free enzyme is ready to take off. Another substrate molecule. समझ में आया? Yes or no?